लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम, जिसमें ओवरऑल क्लासिफिकेशन मैंने आप सबको बताया था कि किस तरह से ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है, एंड देन इसके जो नर्व बंडल्स इसमें से ओरिजिनेट होते हैं वो PNS पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम का पार्ट बनते हैं। पेरिफेरल न्यूरल सिस्टम स्ट्रक्चरली बात करें तो डेफिनेटली क्रेनियल नर्व्स कितने पेयर्स से कैन रिकलेक्ट, सो क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स एंड स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर्स इन ह्यूमंस। तो इन पेयर्स से ये पूरा नेटवर्क हमारे जितने भी सेल्स हमारे बॉडी में लाइव सेल्स हैं उन सब में ये ओरिजिनेट करते हैं, सबका कोऑर्डिनेशन देखते हैं। और स्पेशली डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही प्रिसाइज और यू कैन से मोर कंसंट्रेटेड न्यूरल सिस्टम इज प्लेस्ड। तो ये पूरा हमारा सिस्टम होता है। तो अब हम बात करने जाएंगे कि ब्रेन को क्या अगर हम और डिटेल देखें, सो व्हाट वी सी देयर। सो लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अबाउट द ब्रेन पार्ट। तो यहाँ पर जब हम बात करेंगे अबाउट द ब्रेन, और ये वाला पार्ट हम देख चुके थे ऑलरेडी, so let me tell about, yes, so next page. Reflex action के मैं आपको बाद में बताना चाहूंगी, पहले हम brain आएंगे। So let's talk about the brain first. Yes, this is the one which I was talking about, the brain. ये डायग्राम है, ठीक है। दिस इज द डायग्राम फॉर द ब्रेन, जिसमें आपको सारे पार्ट्स, ब्रेन के सभी जितने पार्ट्स हैं वो काफी अच्छे से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दिस इज देयर आर वेरियस पार्ट्स इन दिस स्ट्रक्चर, और ये जो सेक्शन है ब्रेन का जो स्टडी करते हैं इसको सैगिटल सेक्शन कहते हैं। सैगिटल का मतलब होता है इसको साइड व्यू दिया, मतलब अगर सेंटर से हमने ब्रेन ऐसे पकड़ा और उसको बीच में से हाफ किया, उसके दो इक्वल हाफ्स हो जाते हैं, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो उसको हम साइड व्यू सेक्शनल व्यू जो करते हैं उसको सैगिटल सेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रेन के कौन से पार्ट्स होते हैं। सो फर्स्ट लाइक सेरिब्रम, राइट, सेरिब्रम इज देयर एंड इट इज द लार्जेस्ट पार्ट। मतलब बेसिकली हम पूरे ब्रेन को तीन हिस्सों में स्टडी कर सकते हैं, फोरब्रेन, midbrain and hindbrain। तो इस तरह से ब्रेन के तीन हिस्से हो जाए, ठीक है, होते हैं जो हम स्टडी करते हैं। तो इसमें से फोरब्रेन वाला हिस्सा सबसे ज्यादा पार्ट ऑक्यूपाई करता है, मिड ब्रेन बहुत ही मिनिमम, और हाइंड ब्रेन मीडियोकर थोड़ा, राइट। सो फोरब्रेन में सेरिब्रम सबसे लार्जेस्ट स्पेस, और हमारी जो एवोल्यूशन हुई है ह्यूमंस की, क्यों मैमल्स में ह्यूमन बीइंग्स आर डोमिनेटिंग mammals of this earth, this is because of the evolution of the cerebrum। उसकी जो सरफेस एरिया है, कॉर्टेक्स रीजन का जो सरफेस एरिया है, उसमें काफी डीप, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे इसमें डीप फोल्डिंग्स है। तो जितनी फोल्डिंग्स होती है सरफेस एरिया इंक्रीज होता है, मोर न्यूरॉन्स एंड गैंग्लियंस आर accommodated, thus we have evolved the most intelligent, organisms on this planet Earth। So cerebrum has a key role in कॉग्निटिव यानी कि थिंकिंग प्रोसेस, क्यूरियोसिटी का बढ़ना, थिंक करना, कुछ चीजें मैनिपुलेट करना, ये सारी चीजें जो खूबियां हैं वो सेरिब्रम की वजह से इवॉल्व हुई है। So this cognitive thinking processes such as conscious thoughts, problem solving, decision making, memory, language, learning, ये सारा सेरिब्रम का रोल प्ले होता है। So this is the largest part and it has deep foldings, sulci and gyri बोलते हैं इसको। एंड सल्काई कौन सा होता है? सल्काई सल्क करना यानी कि डिप्रेशन, मतलब ये जो डीप डिप्रेशन, इस वर्ड को कनेक्ट किया मैंने, हम लोग ऐसे लर्न करते हैं एग्जाम्स में, नीट के टर्म्स याद करते हैं। तो सल्क यानी कि डीप अंदर, और गायरा है जो ऊपर वाला, ऊपर वाला हिस्सा जो ऊपर की तरफ प्रोट्रूड हो रहा है वो गायरा होता है। तो लाइक दिस वी हैव गायरा, gyrus is singular, gyri plural, and sulcus or sulci, that is sulci is plural, sulcus is singular। इसके अलावा हम और भी देखते हैं, इसमें अब जो ब्रेन है वो लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में डिवाइड हो जाता है, और लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर को बीच में जो नर्व
गैंग्लियंस है, ग्रुप ऑफ नर्व्स जो उसको कोऑर्डिनेट करता है, वो है कॉर्पस कैलोसम। वो हमारे लेफ्ट और राइट साइड के ब्रेन को कनेक्ट करता है। इट इज अ ब्रिज ऑफ 100 million nerve fibers that links the two cerebral hemispheres, right? The surface of the cerebrum is, और इसकी जो ऊपरी हिस्सा है, इसका जो ऊपरी हिस्सा है, सरफेस है, वो क्या है? सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो ये पूरा सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। इट इज अ 6 लेयर्ड स्ट्रक्चर। और नीचे सेरेब्रल में जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रीजन है, उसमें नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है, इसलिए इसको ग्रे मैटर कहते हैं। और जो इसके डीप अंदर वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं, दे लॉन्ग फाइबर्स विद माइलिन शीट, उसको माइलिनेटेड न्यूरॉन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारे ब्रेन के सबसे बाहर वाला हिस्सा जो फोर ब्रेन का सेरेब्रल है, सेरेब्रम, उसका जो ऊपर वाला लाइनिंग है पूरा नर्व बंडल्स के साथ, वो कॉर्टेक्स रीजन कहलाता है, व्हिच इज ग्रे मैटर। इसके बाद अब हम आते हैं इसमें और क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें एक ग्लैंड है, पीनियल ग्लैंड। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो पीनियल एंड हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी, तीन। So there's pineal glands, hypothalamus and pituitary को आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं। इसी से पूरा जो हमारा न्यूरो हार्मोन्स है कनेक्टेड है ब्रेन से। तो हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को एग्जीक्यूशन के लिए परमिशन मिलती है मैसेंजर्स के थ्रू। फिर पिट्यूटरी अपने बाकी एंडोक्राइन ग्लैंड्स के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो यहाँ पर ये सिचुएटेड है फोर ब्रेन के अंदर। इसके बाद हम देखेंगे और भी पार्ट्स। तो मेनली आपको फोर ब्रेन में 10th की फाउंडेशन तक आपको जो भी जनरल बात बताई गई है, सेरिब्रम, कॉर्पस कैलोसम, सेरेब्रल कॉर्टेक्स पार्ट एंड द ग्लैंड्स एसोसिएटेड, राइट। अब इसके अलावा और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं, लाइक जैसे ये हाइपोथैलेमस ही हो गया। हाइपोथैलेमस के साथ जो हमारे उसके नेबरिंग एरियाज है, thalamus is there, hypothalamus, hypothalamus, so there is a well coordinated system working. इसमें एक बहुत ही emotional part of the brain में छुपा हुआ है, and that is limbic system. So that is also getting coordinated, right? So limbic system is also here, but 10th में मैं आपको सिर्फ इसको introduce करती हूँ। इसकी डिटेलिंग हम करते हैं क्लास 11 की फिजियोलॉजी में, एनाटॉमी में पढ़ते हैं और उसकी वर्किंग स्टडी करते हैं। तो लिम्बिक सिस्टम होता है। इसके बाद आता है मिड ब्रेन। सो मिड ब्रेन आल्सो हैज सम पार्ट्स, उसको कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। और तो बेसिकली कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, कॉर्पोरा यानी कि कोई भी एक स्ट्रक्चर, एक कॉर्पस मतलब बॉडी, which is quadrant, जिसके चार जेम लाइक, चार जेम्स की तरह दिखने वाले जेम लाइक। सो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, दैट इज सुपीरियर एंड इंफीरियर कॉर्निकुलाइज। तो ये जो दो पेयर्स है ऊपर के, दो नीचे, तो जो ये क्या करता है, हेड और नेक कोऑर्डिनेशन करता है। अगर सपोज नेक के मसल्स को कहीं पे आपको जो बुला रहा है, अगर यू वांट टू सी दैट पर्सन इज कॉलिंग यू, तो आपकी आई कोऑर्डिनेशन विद द नेक मसल्स, और यू वांट टू हियर इट, हियरिंग साउंड कहां से आ रही है, रिसीव करना है, तो अकॉर्डिंग यू चेक विद द नेक मसल्स। वो पार्ट मिड ब्रेन देखता है। और मिड ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट एक और फंक्शन है कि ये अपने हाइंड ब्रेन के कुछ हिस्सों के साथ मिलकर एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बनाता है, जिसे ब्रेन स्टेम कहते हैं। ब्रेन स्टेम कुछ स्ट्रक्चर्स के से जुड़ के बना है। तो जो ब्रेन स्टेम होता है वो कौन-कौन है? ब्रेन स्टेम में एक तो पूरा मिड ब्रेन, तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द ब्रेन स्टेम? तो ब्रेन स्टेम में आ जाता है पूरा का पूरा मिड ब्रेन, मिड ब्रेन है, और हाइंड ब्रेन में है सेरिबेलम, सेरिबेलम है, ठीक है। और इसके अलावा सॉरी सेरिबेलम नहीं है, इसके अलावा it is the basically the pons and medulla region, pons medulla and medulla oblongata, ये दोनों regions होते हैं। So we can erase it, ठीक है। cerebellum is not the part except cerebellum. Midbrain has pons and medulla, so three structures which forms the brain stem. So it regulates, so it is regulating life support systems such as heart rate, ये सब इसमें ये दिखता है। It is support systems such as heart rate, breathing, blood pressure,
So this kind of things that are living into. Actually, the brainstem is the origin of all the cranial nerves. जितने भी 12 pair of cranial nerves है, वो brainstem से originated है. Then comes the leftover part of the hindbrain. So hindbrain basically it is cerebellum, pons and medulla. ये तीन हिस्से होते हैं. So cerebellum, pons और medulla तीनों मिलकर hindbrain का हिस्सा होता है. इसमें cerebellum is the second largest part of the brain and it is also having two halves which is known as cerebellar hemispheres. इसमें it is responsible for balance, body का posture, coordinates movement, it has a role in speech, language, memory and movement. मतलब memory transfer basically जैसे कि हम देखते हैं limbic system में भी short term memories long term memories में चली जाती हैं and that's why we have some anyone has some traumatic thing or a very excited moment of life वो नहीं भूलते because short term memories long term memories में shift होती है limbic system में. तो इसीलिए ये सारी चीजें coordinated है, well coordinated है. तो यहाँ पर ये पूरी ब्रेन का मैंने आपको बताया. ब्रेन जैसे ही पार्ट इसका वहां पे फिनिश होता है उसके बाद फर्दर इसकी कंटिन्यूएशन इस स्पाइनल कॉर्ड से. तो इट इज cerebellum, pons and medulla. So it is a medulla region where अभी जैसे हमने देखा ये medulla region है. So medulla and this is cerebellum part. ये आप देख रहे हैं इसका है cerebellum part. Then it is pons and medulla. It is related to the breathing का जो है हार्ट बीट वगैरह देखना, वॉमिटिंग सेंटर्स ये सब इसमें होते हैं. स्पाइनल कॉर्ड जस्ट मेडुला की नेक्स्ट है. So medulla is also having reflexes. Brain reflexes medulla control करता है और instant involuntary sudden reflexes for protection. That is the spinal cord. So spinal cord is that is spinal reflexes. So इस तरह से reflex actions govern होते हैं. Let's see what are reflex actions. तो ये ब्रेन का हिस्सा हुआ. तो इसमें आपको you can see functions क्या-क्या है cerebrum के नोट्स में इसमें लिखा हुआ है that the cerebrum controls the voluntary motor actions. It is a site of sensory perception like tactile and auditory perceptions. Tactile मतलब touch, pressure, touch जो skin में होते हैं and auditory perception. It is a seat of learning and memory. Then hypothalamus क्या करता है? Hypothalamus lies at the base of the cerebrum and it is controlling the sleep wake cycle. जिसे circadian rhythm कहते हैं. Day and night diurnal rhythm of the body is under the control of hypothalamus. It also controls the urge for eating and drinking. Cerebellum plus of course मैंने बताया कि limbic system के साथ coordinate करके emotional part of the emotions को भी control इसका regulatory function है. Cerebellum is for the the structure, motor functions, motor memories, sports related works, medical memory, creativity, training, workouts, सारा cerebellum इस process में helpful है. Medulla is where forms the brain stem. मैंने आपको बता दिया along with the pons. So like this, involuntary functions इसके side में है medulla की तरफ. This is all about the brain part we have discussed. All right. Next, after this, we will be talking about that what are the yes, we can see this function of various parts as a summary of data. Parts of the brain में cerebellum का function क्या है? Seat of mental abilities, controls thinking, memory, reasoning, perception, emotions, and speech. It interprets sensations and responds to cold, heat, pain, and pressure. Diencephalon जो part होता है, relay center for sensory impulses such as pain, temperature, and light. Reflex center for muscular activities, center for certain emotions such as anger, then center for water balance, blood pressure, body temperature, sleep, and hunger. Hypothalamus controls the pituitary gland, which functions as a master gland. The diencephalon is the part of the forebrain. Then comes the midbrain, so it relays motor impulses from the cerebral cortex to the spinal cord. Communication में help कर रहे हैं, association areas बने हुए and relay sensory impulse from spinal cord to the thalamus. तो इससे connection भी है, reflexes for sight and hearing. Then cerebellum. Cerebellum maintains posture, equilibrium, and muscle tooling. Coordinates voluntary movements initiated by cerebellum. Medulla oblongata. It contains center for cardiac, respiratory, and vasomotor activities. What is vasomotor? Means blood pressure. Blood related things, right?
तो ये उसके डायमीटर को ऑल्टर कर सकता है. So it refers to actions upon a blood vessel which alter its diameter. It coordinates reflexes like swallowing, coughing, sneezing, and vomiting. So these are the medullary reflexes. Then, if we talk about the spinal reflex, so let's talk about those automatic responses. Spinal reflexes. So that is here. इससे पहले हमें पहले एक बार रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल आर्क रिफ्लेक्स आर्क को समझना होता है. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है, उसके कंपोनेंट्स क्या है. So let's see रिफ्लेक्स एक्शन क्या है. So reflex action is a special case of involuntary movements, involuntary organs. So when a voluntary organ is in vicinity of a sudden danger, it is immediately pulled away from the danger to save itself. So for example, when your hand touches a very hot electric iron, आप बात कर रहे हैं फोन कर रहे हैं, एकदम से आपके हाथ में गरम कुछ लग गया, प्लेट पकड़ लिया, स्टीम कोई बर्तन आपके हाथ में लग गया, माइक्रोवेव ध्यान नहीं रहा, खोल के आपने एकदम उसको टच किया तो गरम लग गया. So even if you diverted your mind is somewhere else in talking or attending somebody and suddenly things happen like this, so automatically आपका hand muscle mass उसको withdraw करेगा. So this is like involuntary actions where immediate thinking is not involved और वो short reflex action arc लेकर अपना decision ले लेता है. Protection के लिए body spinal से root से अपना decision ले लेता है और protect करता है. But definitely ये फिर long term memory में जाएगा, अगली बार आपको mistake ना करें. आपका एक incident आपको बचाता है कि भाई इस तरह से मुझे बच के रहना है. I'll be careful while opening the microwave, or I'll be handling the kitchen things carefully. I should not touch the hot objects and burn myself again. तो वो experience long term memories में जाने के लिए उसको brain में भेजा जाता है. So that changes into a long term memory with prior experiences. So you can see here that it is pulled away from the danger to save itself. For example, when your hand touches a very hot electric iron, you move away from your hand and let it go. All of this happens in a flash, and you have hand is saved from imminent injuries is an example of reflex. There are major reflexes we look at. So reflex काफी होते हैं. There are several types of 100+ reflexes we have in our body. ठीक है. Some reflexes are inborn, मतलब nature से gifted है, species के साथ उसके साथ आया, उसको training की जरूरत नहीं है. Right? Blinking of eyes when there is a brightness, somebody there's a brightness around and the person blinks the eyes. The newborn will also do. Right? So these are the basic things. But एक होता है conditional reflexes, which your mind with practice and a routine work. किसी भी object, किसी sound, light के साथ या कोई mostly sound related होता है, रिफ्लेक्स आ जाता है. एक पर्टिकुलर टाइम बॉडी क्लॉक सेट हो जाता है. कोई एक पर्टिकुलर ऐसा मोमेंट कि जब आपकी एक्टिविटी उससे रिलेटेड है. बहुत कॉमन, मोस्ट कॉमन एजुकेशन लाइन में स्कूल्स लाइफ के एग्जांपल्स में है ब्रेक्स, लंच ब्रेक का बेल हो गया या डिस्पर्सल बेल्स हो गए, असेंबली बेल्स हो गई. तो ये कुछ पर्टिकुलर ऐसे हैं कि धीरे धीरे बॉडी में रिफ्लेक्सेस, कंडीशन रिफ्लेक्सेस कर देती हैं. Swimming हो गया, and then writing while talking हो गया, knitting while speaking and talking or watching movie. Some can do that very efficiently. There are some skills which are possible, right? So these are, conditioned reflexes. Salivation is the best experiment by Pavlov on a hungry dog. So whenever he used to offer the dog food, he used to ring a bell. तो बेल और उसके सैलिवेशन को उन्होंने कंडीशन कर दिया. एक दिन फूड ऑफर नहीं किया लेकिन बेल बजा दी उन्होंने, बट द डॉग स्टार्टेड सैलिवेशन. तो ये होता है बेसिकली दैट आवर बॉडी इज कंडीशन्ड इन दैट पर्टिकुलर टाइम, बॉडी क्लॉक टाइम सेट हो जाता है. ठीक है. कई बार वीकेंड्स में इवन इफ वी डोंट हैव टू यूज अलार्म, दर आज हमें आराम से उठना है, लेकिन फिर भी there are most of the experiences where the eyes open at exactly in that particular hour, and then we say, oh, okay, sleep again. You feel so good, right? So these are some reflexes. So conditioned reflexes are there, and non-conditioned, or you can say natural reflexes, which are involved by the species itself. So reflex क्या है, arc क्या है? Arc है 5 components का. So let's see those components. वो क्या क्या है? जैसे यहाँ पर हम देख सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट थिंग, स्टिमुलस. क्या उसको वो कौन सी चीजें हैं जो स्टिमुलस मिलेगा, एंड देन देयर इज अ पाथवे ऑफ नर्व्स, इसको बोलते हैं. तो वो है सेंसरी न्यूरॉन
और जब भी हम डायग्राम करेंगे तो जो बैक साइड है बी पेज है, तो ये वाला साइड डॉर्सल होता है, बैक साइड बैकबोन वाला, और ये वाला साइड वेंट्रल होता है, फ्रंट, right? So ventral is that part which is facing the atmosphere, the environment, or dorsal होता है the back side, opposite to the ventral side, opposite to the substratum or the environment. So dorsal side में वो sensory neuron का बनेगा, इसी को वो word यूज होता है dorsal horn, HORN, dorsal horn, that means this particular pathway. तो यहाँ से sensory neuron गया. This is spinal cord, part of the central nervous system. Then the message also goes to the brain, as I told you, for the next experience. हमेशा share होता है brain के साथ कि भी ऐसे incidents हुआ है, अगले time बच के रहना है. तो sensory neurons है, ये spinal cord. Spinal cord हम याद दिलाने के लिए ऐसे पढ़ाते हैं कि spinal cord चमकता है, यानी कि बाहर वाला होता है white matter, अंदर होता है grey matter. तो ये यहाँ पर देख सकते हो H shape like a butterfly wing, इसको बोलते हैं dorsal horn, और जो outgoing वाला है पैसेज इसको हम बोलते हैं ventral horn. ये वाला पैसेज ventral horn होता है, और you can see ये mixed nerve का example है, this you study in levels. So this you see here that sensory neuron will take the message to the CNS, interpretation और relay neuron आएगा बीच में, जो उसके उसको देखेगा कि sensory to motor का जो इंटरकनेक्शन है वो रिले न्यूरॉन करेगा न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू. इसके बाद ये मोटर न्यूरॉन आएगा, मोटर न्यूरॉन मैसेज टेकर इज गो टू द इफेक्टर ऑर्गन, राइट, मसल्स इन द आर्म्स. सो लाइक दिस द मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स. ये यहाँ पर मसल चाहिए, अदरवाइज सेक्रीशंस चाहिए, ग्लैंड्स चाहिए, स्वेट चाहिए, स्वेटिंग होनी है. तो ये सारा डिपेंड करेगा कि इफेक्टर ऑर्गन्स कौन-कौन से इन्वॉल्व है, एंड द हैंड्स विल पुल. So like this is the reflex arc with its components. ये बहुत common एक flow chart बनता है कि what is the correct sequence. So the path through which nerve signals involved in a reflex action travel is called the reflex arc. The following flow chart shows the flow of signal in a reflex arc. So you can see this particular flow chart. Stimulus to the receptor, receptor to sensory neurons, then interneurons in the spinal cord itself. Motor neurons, the motor pathway is ventral horn, or ventral pathway, effector, afferent pathway भी हो सकता है, तो ये वाला efferent, ये afferent, effector, and response is shown. So this is how the person protects itself from dangers. Right? After this, we will talk about the next. इसके बाद हम लोग ये step 1, step 2 की कैसे हो, ठीक है? तो ये पूरे steps इसमें show कर रहे हैं. आप देख सकते हो step 1. What is the first step? Arrival of stimulus and activation of receptor. Like it's a failure, which is a pointed object. उस पे हाथ लग गया गलती से. Step 2, activation of the sensory neuron. वो receive करेगा message. अच्छा, यहाँ पर एक है कि सीधे पैसिव पर्टिकुलरली इस तरह के dorsal horn की तरफ ये स्पेशल टाइप का न्यूरॉन होता है, सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन. इसकी लोकेशन आपको कई बार पूछी जाती है. This is pseudo unipolar neuron, right? तो ये आप नोट कर सकते हैं. So this is present in the dorsal root of spinal arc. Next, after this, we see here sensation related to the brain by collateral nerves. उसको ले जाती है, मैसेज को ब्रेन में इन्फॉर्म कर देती है कि हमने डिसीजन लिया है. And यहाँ पर ventral root से information processed in CNS, and उसको ले जाएंगे ventral root से activation of motor neurons and the effector step-by response by the effector, that they pull the hands from there. Okay, so reflex arc passes the level of the spinal cord, and the signals involved in reflex do not travel up to the brain. This is important because to save the time, sending signal to the brain would involve more time, and at that time we need a fast action. So every action is ultimately controlled by the brain. The reflex action is being controlled at the level of spinal cord. So muscular movements and neural control, देख सकते हो इससे related है. Muscle tissues have specialized filaments, जो मैंने आपको muscle वाले tissue वाले उसमें days में पढ़ाया है. 9th class के foundation में डरा हुआ है ये animal tissues से. Actin and myosin filaments होते हैं. So when a muscle receives nerve signal, a series of events is triggered in the muscles, and calcium ions enter the muscle cells. It results in actin and myosin filaments slide towards each other.
Basically, it is acting slides towards the myosin band, and that is how a muscle contracts. So contraction of muscle brings movement in the related organs. So this is how the things work together, right? You can bring a bunch or give a diagram. This is important, reflex R, but still the brain is involved in direction, right? So some other branches of the neurons. So this is about the human brain, reflex action, then synapse we have discussed in the previous one. So now in the next video, we'll talk about the plant coordination, right? Stay tuned with us. Bye.